नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। साथ में सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए आपके सेशंस को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा ब्यूटीफुल सा हमारा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। इस पे हम जो देख रहे थे टॉपिक टर्बो मशीनरी। टर्बो मशीनरी का एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन बोल रहा है आपको शो। शो बोला, क्या बोला? शो सो दैट द डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन of an axial compressor, of an axial compressor stage is given by R is equal to 1 upon 2 minus 1 upon 2 Ca by U tan over the alpha 1 minus tan over the beta, where Ca is equal to axial flow velocity, U is the linear velocity of blade, alpha 1 is guide vane angle at inlet, beta 2 is blade angle at rotor outlet. ओके, चलिए इजी पीजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिएक्शन का नोटेशन है, जो कि होता है हमारा एक्चुअल चेंज ऑफ एंथैल्पी इन रोटर अपॉन actual change of actual change of enthalpy in stage. Okay, so relative velocity 1 का स्क्वायर माइनस रिलेटिव वेलोसिटी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन 2, whirling velocity at 1 and 2, a difference into u. So mean blade velocity is equal to u1 is equal to u2. So the degree of reaction Vr1 square minus Vr2 square division over the whirling at 1 minus whirling at 2 times of u. So degree of reaction is equal to sec square beta 1 sec square of beta 2 division over 2 tan over the beta 1 minus tan over the beta 2। अब ये रिलेशनशिप कहाँ से लिख दी है? सी ए वगैरह। तो ये आपका जो है नॉर्मली एक वेलोसिटी ट्रायंगल से आया हुआ है।
VW2 U2, it's a CA VR2 V2, it's a beta 2 alpha 1. R stands for rotor is to be here. Inlet side is to be VR1 beta 1 alpha 1 C1 CA, and it's a VW1, and mean blade velocity it's a U. Okay, all the notations are to be completed. So the degree of reaction is to be termed as this. Now, dancing down the track, we have the H3 minus H1. H naught 3 minus H naught 1 is equal to U times of CT2 minus CT1. H2 minus H1 is equal to W1 minus W2 square upon 2. Now R is equal to H2 minus H1 over H naught 3 H naught 1, W1 is square W2 is square over the 2U CT minus CT2 minus CT1. So our value is to be CA square tan square beta 2 tan square beta 2 beta 1 minus beta 2 2U CA tan of beta 1 tan of beta 2 half of CA upon U tan of beta 1 tan of beta 2. So value of R half of CA by U tan of beta 1 tan of alpha 1 tan of alpha 1 tan of beta 2. So from the diagram क्या बोल रहा है tan of beta 1 alpha 1 U by CA R is equal to 1 upon 2 CA by U upon CA minus tan over the alpha 1 and beta 2. The final value is to be 1 upon 2 minus 1 upon 2 CA by U tan over the alpha 1 minus tan over the beta 2. That is the final value.
Easy. Now, dancing down the track. Move ahead with the next question. क्वेश्चन बोल रहा है क्या? An axial flow compressor of 50% reaction bleeding has bleeding has isentropic isentropic efficiency of 82%. It draws air at it draws air at 17 degrees Celsius and compressor in the compressor in the pressure ratio of in the pressure ratio of 4 raised to 1. The mean blade speed and the mean blade speed and flow velocity are constant. Flow velocity are constant throughout the compressor. Throughout the compressor, the inlet and outlet angles of blade, the inlet and outlet angles of blade are angles of blade are 15 degree and 45 degree respectively. 15 degree and 45 degree respectively. Angles measured from axial direction. Direction. Blade speed is equal to blade speed 180 meter per second, and work input factor is equal to work input factor 0.84. Now to calculate number 1 flow velocity, and the number 2 is to be number of stages. Number of stages. These two values are to be calculated. Repeat कर दें आपके लिए, ठीक है. An axial flow compressor 50% of reaction blades has an isentropic efficiency 82%. It draws air at 17 degrees Celsius and compressor in the pressure ratio of 4 is to 1. The mean blade speed and flow velocity are constant throughout the compressor. Inlet and outlet blades of the blades are 15 degree and 45 degree respectively. Angles measured from the axial direction. Blade speed is equal to 180 meter per second and work input factor 0.84.
Calculate the flow velocity and number of stages. These two are to be considered. ओके, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर पी इज इक्वल टू 4, एन सी 82%, 50% of reaction leading, then R is equal to 0.5, work factor 0.84, CO blade speed is equal to 180 meter per second. इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं भाई साहब. ओके, CR1, CA1, C1. It's a CT1 U. ये इनलेट का था. आउटलेट वाला angles beta 1, alpha 1. Angle is to be beta 2, alpha 2, CA2, CR2, C2, CT2, and mean blade velocity is to be U over here. Okay, so here the stages are कैसा symmetrical. Okay, so R stands to CA by 2U degree of reaction tan over the beta 1 plus tan over the beta 2. R is equal to 0.5. Putting the values, all we have 180 by tan of 15 degree plus tan of 45 degree. Easy peasy, value calculated to be 141.96 meter per second. Alright, now moving ahead. Temperature rise per stage. Temperature rise per stage, which is delta Ts is equal to work factor into U into Ca over the Cp, tan of 45 minus tan of 15 degree. So after that, 0.84180 141.96 1 minus 268 point का upon 1005 15.635, it's in Kelvin. Now the overall temperature T1 upon compressor efficiency Rp की power gamma minus 1 is equal to 290.82 4 raised to power 0.286 minus 1. So we have the value gamma minus 1 upon gamma 0.286, 172.2
084 Kelvin. Number of stages. Therefore, N is equal to delta T overall upon delta T of stage 172.084 upon 15.634 is equal to 11 इतने स्टेजेस की जरूरत पड़ेगी। साथियों, यहीं तक आपका सेशन रखते हैं। एक काम करना है आपको, बीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक इसे पेनिट्रेट करना है। इतना ही आपका सेशन रखते हैं। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।